Hello dear children, welcome to SS classes with Amin sir. Today we are going to discuss about the classification of the resources. This is the topic from lesson number 1, 10th class geography, resources and development. So far we have discussed about the definition of the resources, what is a resource with some examples, living examples and the non-living examples. We have discussed about the man-made resources and the natural resources. We have also discussed about the requirements for a thing to be called as a resource. Now, today's topic is as classification of resources. Now, there are different classifications of the resources. First one is classification on the basis of origin. Now, on the basis of origin, I think you remember when I discussed with you the examples of the resources. In that topic, I told you resources are present in our environment. Some of the resources are living resources, some of the resources are non-living resources. So actually we have these two resources present in nature. Originally we call them as natural resources, living and non-living. So first classification is based on the basis of origin, that is mostly the natural resources. So what type of resources we have on the basis of origin? We have on the basis of origin biotic resources, and we have abiotic resources. In simpler words, we can say biotic resources belong to the living world. So that is why we also call them as living resources. Living resources. Living resources. Now here we can call them as non-living resources. I am writing here RE, that is resource. So how can we define the biotic resource or living resource? I will put it A here. So I will explain here A as biotic resource. Now these are the resources which belong to the living world. In simpler words, these resources belong to the living world. Or we can say these resources are living resources which are present in the biosphere. This is also correct. Now, what are the examples of these resources, living resources? We have the examples like I told you before this, examples are very much important. Now you can write plants of all types, or we can say simply trees. Trees have life, so they belong to the biotic world. Now besides we have animals, domestic animals, wild animals, fisheries, insects, birds, all belong to the biotic world, and in general we can call them as animals. We can put also the human beings.
etc. Now when we write here the etc, we have the trees, that means we have other type of plants including the trees like agriculture plants, vegetable plants, fruit plants, flowering plants, non-flowering plants, grasses of various types, all can be called as the biotic resources. Now when we speak of the animals, we have the wild animals, we have domestic animals, we have the animals which live underwater, fisheries also. We can also include birds with the animals, insects also, and then we have the human beings. So all these are the examples of the biotic resources. Clear this thing? Now another one we have as B, non-living resources. Non-living resources. Now what are these non-living resources? Simply the resources which do not have life. The resources present in the biosphere which do not have life. They belong to the non-living world. They belong to the abiotic world, we can call them as. Here we have written, these resources belong to the living world. Now here we can write, these resources belong to the non-living world. Or the resources present in the biosphere which do not have life. ये भी आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? The resources or these resources belong to the non-living world. Or we can say the non-living things present in the biosphere. You can also write this. This is the definition of the non-living things as well. The non-living things present in the biosphere. Now, for example, we can write here air, non-living, water, non-living, minerals, non-living, land, non-living, etc. Now, actually, we have these things which are natural. See, all things here, natural. Here, all things natural. Now, why we are writing only the non-living and living things which are natural resources? Why we are writing them as the biotic resources and the abiotic resources or non-living resources? Since we are classifying here the resources on the basis of origin, the originally हमारे पास सिर्फ ये दो चीजें हैं. ना मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास all the man-made things are non-living. So why we don't group them with this biotic as well as abiotic world? ये इसलिए हम उनको इनके साथ ग्रुप नहीं करते क्योंकि हमको बोलना है origin, असल में कौन से रिसोर्सेज है. सो असल में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है. नेचुरल रिसोर्सेज को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, फिर वो बनाते हैं दूसरी चीजें, लेकिन वो चीजें नॉन लिविंग है. मगर ओरिजिनली हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज में या तो ये लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है या ये लिविंग थिंग्स है. इन्हीं चीजों से हम बाकी सारी चीजें निकालते हैं और उनको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिनली आपको बोलना है कि हमें कौन सी चीजें रिसोर्सेज कहलाती है, कौन सी चीजों को हम ओरिजिनली रिसोर्स कह सकते हैं. क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास ऊपर वाले की दी हुई सारी चीजें हैं, जैसे ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, फॉरेस्ट्स है, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, फिश एंड सो मेनी अदर थिंग्स, रेप्टाइल्स एज वेल. ये सारी चीजें हमारी ऊपर वाले ने दी हुई है. इन्हीं चीजों से हम बाकी चीजों को बनाते हैं. सो ओरिजिनली हमारे पास ये नॉन लिविंग एंड लिविंग
थिंग्स है और रिसोर्सेज है. सो जब एग्जाम्पल आपको लिखना है ऑरिजिन में बायोटिक वर्ल्ड का और बायोटिक रिसोर्सेज का और एबायोटिक रिसोर्सेज का, सो राइट द नेचुरल रिसोर्सेज है. लिविंग रिसोर्सेज, biotic resources. Non-living resources, abiotic resources. So remember this thing. Now another classification we have on the basis of exhaustibility. या तो origin था. Now हमारे पास होगा दूसरा So हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है. Classification number 2, I will write it here this way. Classification number 2. Classification on the basis of exhaustibility. Exhaustibility. Now see, when we say exhaust is a thing, is a term when something gets finished or something vanishes or something gets exhausted. So this is a term related with something that gets finished. So resources में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जो फिनिश भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं भी खत्म हो सकती है. ये हमारे पास है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. सो इसमें हमारे पास है ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. कौन चीजें या तो खत्म हो सकती है कुछ चीजें, या हम उनको दोबारा बना सकते हैं जो खत्म नहीं होगी. सो वी हैव हियर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो दूसरा यहां पे हमारे पास जो होगा वो होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो ये चीजें हमारे पास दो है. एक तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी and non-renewable resources on the basis of exhaustibility. Now what do we mean by these renewable resources? So renewable resources हम उनको बोलते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होगी दोबारा बनने की. The resources which have capability of reproducing themselves. Or they have the capability of regenerating themselves. वो तो खुद ब खुद रिजेनरेट कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कौन सी चीजें हमारी ऐसी हैं जिनको जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जो दोबारा अपने आप को बना सकते हैं, जो रिन्यू हो सकते हैं. तो इसमें हम एग्जांपल्स ये दे सकते हैं. एग्जांपल्स में हम क्या दे देंगे इनको, लाइक प्लांट्स हमारे पास है, ट्रीज वी कैन से, और फॉरेस्ट्स हम लिख सकते हैं. ट्रीज हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ रिजेनरेटिंग देमसेल्व्स. हम पेड़ों को काटते हैं, वी कट द ट्रीज, वी यूज देम in making of various types of goods, finished products, furniture, sports items, building material, etc. लेकिन where we have the trees, we have the forests, we have forested areas, वहाँ पे ये trees automatically grow करते हैं because there are so many seeds of the trees which come down, which fell down, and they get again changed into the plants or the trees. So that way these trees can be called as renewable resource. Now besides we have one more thing here
animals also. There are various animals which are consumed by the carnivorous animals, like wild animals में हमारे पास शेर है, चीता है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरों को खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स को, शीप वगैरह, काउज, बुल्स, बफेलोज, जिनको कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं. लेकिन ये हर्बीवोरस एनिमल्स, इनमें है कैपेबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दोबारा इनमें बच्चे पैदा होते हैं, दोबारा इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है. सो ये हमारे रिन्यू होते रहते हैं, मरते भी हैं, इनको इंसान भी खाते हैं, इनको वाइल्ड एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो तादाद है वो बढ़ती रहती है, बनती रहती है. सो वी कैन कॉल देम एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसके साथ हमारे पास वाटर है. वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो हमको कंटिन्यूसली मिलता रहता है थ्रू वाटर साइकिल. सो वाटर साइकिल से हमको ये पानी मिलता रहता है. As I told you earlier, the ultimate source of heat and light on the surface of earth is sun. So same way, the ultimate source for water on the surface of earth is rain. So rain जो बनती है ये एक वाटर साइकिल से बनती है, जो आपने कई क्लासों में पढ़ा होगा इससे पहले. Water changes into water vapor. That water vapor rises up in upper layers in the upper atmosphere. It gets condensed, then it comes down in the form of precipitation. So the process of evaporation plus condensation and then changing of water vapor into water comes down in the form of precipitation. We call that as rain. Again, this rain goes back into the atmosphere in the form of water vapor. Some is absorbed by the land, some portion is absorbed by the trees or the plants, we can say. So this way, this continuously circle of the water is responsible for giving us the water. So that way we can say water is a renewable resource because it renew होता रहता है, बनता रहता है. तो दूसरी एक और बात है हमारे पास, प्लांट्स भी हेल्प करते हैं बारिश को बनने में, क्योंकि प्लांट्स में भी एक प्रोसेस है which is called as transpiration. प्लांट्स भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो वाटर वेपर ऊपर जाता है और इस प्रोसेस के प्लांट्स को ये पानी का जो वाटर वेपर छोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. इसके वजह से भी प्लांट ऊपर क्लाउड्स में मदद मिलती है बनने में, तो बारिशें होती रहती है. सो वी कैन कॉल वाटर आल्सो एज ए रिसोर्स दैट इज रिन्यूएबल. अब एक और हम लिख सकते हैं एयर. एयर भी एक हमारे पास एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल है. तो कैसे रिन्यूएबल है? We get the oxygen from the air. See, air contains various types of gases. It contains the oxygen, it contains hydrogen, it contains carbon dioxide and so on. But air में जो oxygen है, that is inhaled by the human beings, and this oxygen, you know, is very much essential for living. Now what we exhale, हम वापस क्या छोड़ते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हम लेते हैं ऑक्सीजन हवा में से, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है. लेकिन व्हाट वी एक्सेल, जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ये हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी हवा में जाता है. तो हवा से प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं. सो दिस वे ऑक्सीजन हमको कंटिन्यूसली प्लांट से मिलता है और प्लांट्स को एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग से कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई मिलती रहती है. सो दैट वे वी कैन से air is also a continuous resource and it's a renewable because air में present carbon dioxide और oxygen life के लिए जरूरी है mostly. So these resources can be called as the renewable resources. उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है non-renewable resources. I will write it here. The second one, that is non-renewable resource. B as non-renewable resource.
So ये non-renewable resources जो है, these are the resources which cannot be renewed. Once they are used, they cannot be renewed or they cannot be regenerated. They cannot be reproduced in a short period of time. So हम इसको define कैसे कर सकते हैं? The resources which cannot be regenerated or reproduced in a short period of time. In a short period of time. Once these resources are used, it's very much difficult to reproduce them, to regenerate them or remake them. Like we have examples में यहाँ पे लिखूंगा. We have coal, we have petroleum, we have natural gas, etc. Minerals also. Now these resources are the resources which once can be used, they cannot be renewed, they cannot be regenerated, they cannot be reproduced in a short period of time. You might have read in the science about coal, petroleum, natural gas. Now these resources are called as fossil fuels. They have been formed some millions of years back due to various processes, various geological processes. And you might have read that in the science. Now you know that coal takes millions of years to get formed. So once the coal gets finished, exhausted, it cannot be regenerated in a short period of time. If God forbid, suddenly coal, petroleum, natural gas will get exhausted, there will be energy crisis in the world. The world will be in a still stand position. So these resources, once used, gets finished and cannot be regenerated quickly. So we call them as non-renewable resources. I hope these two classifications, classification on the basis of origin, classification on the basis of exhaustibility is clear to you. Remember children, develop interest with in SST and this will help you in future. And there are some slow learners I know in the various schools, especially in the government schools, in various English medium schools also. So for them there is an advice, you should not give up. हार नहीं माननी होती है. आपको कोई कमज़ोरी है, मैंने देखा है अपने दौर में जब मैं स्कूल में नौकरी करता था, 17 सालों से मैंने कश्मीर के सबसे बेस्ट स्कूल मैनसन बिस्को स्कूल में नौकरी की है. मिडिल स्कूल में भी मैंने 4 साल नौकरी की है. मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो क्लास में डरते हैं टीचर से क्वेश्चन पूछने में. उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम मर गए या हमारी बेइज्जती हो जाएगी. ऐसा नहीं है. जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, आपको पूछना चाहिए, आपको सीखना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो एकदम से हार मान जाते हैं. इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, सीखना चाहिए. चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं भी आपको जरूरत पड़े पूछने की, आप पूछो. 1 बार 2 बार पूछो जब तक क्लियर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो. लेकिन जो बच्चे चुप रहते हैं, पूछते नहीं है, सीखते नहीं है, उनको आगे से बहुत नुकसान होता है. वो हार जाते हैं. इंसान तभी हार जाता है जब कोशिश करना छोड़ जाता है. कोशिशें करना मत छोड़ो. See you next time. God bless you.